क्विकली भारतीय बाजार स्क्रीन पर आएंगे। लोस से रिकवर हो रहे हैं। इस समय की हाईलाइट ये है 260 के लेवल्स पर निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ आपको इंटरडे चार्ट्स में नजर आएगा। 0.3% का दबाव। आज हम स्लिप होते होते 200 के नीचे चले गए थे। 190 192 के दिन के लोस थे वो 190 के लेवल से अब हम 60 पॉइंट मतलब 70 पॉइंट ऊपर अब इस समय कामकाज दबाव में है, इसमें कोई शक नहीं। शुरुआती जैसे आए थे उसके बाद से वो प्रेशर माउंट हो गया था भारतीय बाजारों में। लेकिन इस समय की हाईलाइट है कि पिछले आधे घंटे में लोस से बढ़िया रिकवरी अंडरवे है। 70 पॉइंट सुधर गए। निफ्टी बैंक वापस इन ग्रीन है। तो हम लोग 12:30 सास बहू कर रहे थे तब वो निफ्टी बैंक जाते जाते लाल निशान में स्लिप हो गया था। पिछले आधे घंटे की तस्वीर आपकी स्क्रीन पे लाल निशान से अब 1/4% की बढ़त की तरफ निफ्टी बैंक बढ़ता हुआ। ऐसे ही मार्केट पे तो उस समय ब्रेथ निगेटिव की तरफ स्लिप हो गई थी, अभी एडवांसेस के फेवर में, लेकिन अभी भी 1:1 का रेशियो मान लीजिए अगर एडवांस डिक्लाइन स्क्रीन पर आएगा तो ठीक है। ये है बाजार की अब तक की चाल, लेकिन आज समय नहीं वेस्ट करते। मार्केट्स की सारी डिटेल्स टिकर टीम बढ़िया तरीके से चलाती रहती है स्क्रीन पे, तो वो सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो वहां पे कैप्चर हो जाएंगे। मैं फोकस कर रहा हूं अब इस कंपनी डेटा पैटर्न्स इंडिया पर। पहले जरा क्विकली डिटेल्स दे देता हूं आपको। आज इस आईपीओ का डे 2 है। कल थर्सडे को यह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए बंद होगा। 555 से 585 रुपए का प्राइस बैंड, कुल मिलाकर आईपीओ के जरिए 588 करोड़ रुपीस मोबिलाइज करने की योजना। बाकी की डिटेल्स अब स्क्रीन पर आती रहेंगी। इसी कंपनी डेटा पैटर्न्स इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीनिवास गोपालन रंगराजन साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। बाकी सब ठीक, एक ही दिक्कत है, सर की हिंदी तंग है और उतनी अंग्रेजी मेरी तंग है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कुछ बातचीत हो जाए और आप लोगों को समझ में। सर हंसे तो हिंदी आती है थोड़ी बहुत, मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे हिंदी में बात करने की। लेकिन रंगराजन सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन डेब्यूइंग इन द प्राइमरी मार्केट्स। Before you know, I was just studying about this company. It's a defense equipment manufacturer which supplies to defense and aerospace. So what all the company manufacturers, who are your end clients, who are your customers that you supply to, sir? If you can make me understand this business model of Data Patterns India. See, we have two portions of the business. Initially, we start developing products for the Defense Research Labs, that is the DRDO in India. Once we deliver the systems to them and they qualify the end equipment, they transfer technology to defense PSUs like BEL, HAL, BDL, etc. And then they get contracts from MOD on a nomination basis for Air Force, Navy, and Army. When they get the orders, back to back, they place the orders back to us because we become the original equipment manufacturer, so that the products designed by us. So our order starts with initial design and development contracts to DRDO. Then we graduate to production contracts from the PSUs. That's the first market we do. We build products for across a stable of electronics and also for all platforms. For example, space, air, land, water, underwater, all platforms we design products. That's the first market which is accessible to us and open to us. Today with Atmanirbhar Bharat and India, MOD tenders today are addressable by Indians. The last 70 odd years, we've only been importing from foreigners. Now that market is now accessible to Indians, and only Indians can quote against MOD tenders today. So an enormous market of 30, 40, 50,000 crores is getting exposed to us, Indians, and the market is huge. So we need to have products to build and address the market. Second market is opened out. Third is that an Indian ecosystem is opened out to us that we need to build more in India. Fourth is dual use markets. Fifth is export. So this is the kind of markets we are addressing today. So whatever you supply, you go through in-house design and development capabilities, or you outsource from third parties as well, Mr. Rangarajan? We, from the beginning, 30 odd years, we have been a design and product company. We design everything in-house. Okay. We have about 750 people, out of which 450 are engineers. We have 350 design and engineering team, and we develop all the IP. We don't buy and integrate, we design from scratch. So how big is your manufacturing establishment, your base? I believe you're based out of Chennai. What's your capacity? What's the current capacity utilization levels? At what levels are you currently operating, sir? We have 100,000 square feet of manufacturing infrastructure. We have very modern, certified infrastructure for pick-and-place line, vibration, thermal cycling, all of which is available in-house. So we can produce up to about 500-600 crores of equipment on our production. We are in the 300 crore range now.
However, we are also expanding our infrastructure. We're doubling our capacity now. That is already under construction, and the construction will be completed. We move in another 3 to 4 months. It will be available. We are doubling our capacity. On top of that, we're also creating equipment bay for hangar space so that the radars and electronic warfare trucks can be brought inside, integrate. See, what really is happening in the market is you cannot be a component or subsystem supplier and expect to scale in this business. The big markets are what we've been importing. 80% of Indian defense is imported. What we need to do is address that market instead of competing in the component business in the Indian sense. So that's what we've been doing the last 15 years, building full competency and complete products, probably the first company to build and design indigenously the entire range of radars and electronic warfare receivers. We expect to scale this competency and build complete systems and become an equipment supplier in defense like Israel companies, French companies, British companies, and US companies. This is what we want to do. Not look at component vendors and then do this. We build, fortunately for us, components to end system, all of them we build. So the idea is to scale to be an Indian defense equipment supplier which can export products. As on date, what's the situation? How far you're dependent on government of India for your contracts or the allied entities of the government, maybe those defense public sector undertakings? Is your entire order book constituted out of the among these government and PSU entities, sir? Or you export also as on date? We export 10 to 12% of our products. One to export to UK. There's a very advanced avionics signal processing system for an advanced AESA radar, airborne radar. The 100 system will be delivered this month. They're very happy with us. 3 more versions have been done. We expect about 200 system order for the next quarter onwards, so we will scale that business. That is one. So we also do space systems. We do small satellites. We want to scale into a defense satellite program. Our satellite has been launched. We have a small nanosatellite program, which we're doing for 2 other vendors here. ISRO uses our nanosatellite parts, both the ground station as well as the airborne system is bought from us and a single vendor. We build almost all of ISRO's test systems. For 95% of what is flying in the launch vehicle, we've done the test system, and we get repeat contracts year on year from them on a single tender. We have a rate contract with them. The launch countdown facility has been designed by us, which is all launching all this launch vehicles, as you see in Sriharikota. So that gets another 10 to 12%, 15% business. But we have an orders on hand over 600 crores, out of which 250 crores is direct order from MOD for Air Force and Navy, where we built the entire radar, demonstrated it for aircraft landing requirements. The rest of all from defense PSUs and DRDO. Interesting. Acha, you're looking to mobilize 588 crores. 60% is OFS out of that, and the remaining 240 crore rupees is the fresh issuance. So the fresh issuance is going to be diverted towards almost around 100 crore rupees towards working capital requirements. So is this a working capital intensive business because you're dealing with government? What's the current outstanding debtors, sir? What's the quantum? B, the second part goes 60 crores for debt repayment. So what's the current debt on company's book? Plus, you're spending 60 crore rupees on capex. So is there additional plant or there's an additional line that you're talking about? See, what has happened is today we are in the subsystem market. We're building electronics manufacturing in small boxes, avionics. Market is now, when you look at address the market for government in the MOD tenders, they buy complete equipment. The big market is in the equipment, full radars, full electronic warfare equipment. So the idea is to try to build the equipment rather than only the component parts which we've been doing. The last 10 years, we have built capability to build equipment and started getting orders for complete equipment. So we're building an infrastructure, a large hangar space, which can bring in multi-ton metal, integrate metal inside, build the radars, test the radars, build the vehicle inside. So that is the kind of capex you're doing, spending about 85 crores and building not only for the contracts on hand, but for future requirements, what we're addressing markets. See, what India does today is, since we don't have the products, we're actually tying up with foreign companies and then making the product available on a work share arrangement. This is what large corporates are doing. We do something differently. Our model is different. We design from scratch, build the equipment, and we want to see that we position ourselves like any foreign company building the products. That is a large market. That's what we're trying to address. That is the scale we want to do. So that is what we're doing in the capex market. As far as working capital is concerned, I expect the working capital to come down drastically as we go along. As we even increase scale,
Basically, because earlier we've been in the development-centric market where the working capital cycle can be stretched. But today, our order book is 70% production, 20% is development. Ajay, So with production quantity, yes. Rangaraj sir, some quick Q&As. You did a pre-IPO placement, mobilized 60 crore rupees at 577 per share. These funds were raised from three entities, three funds, I believe. I just wanted to confirm, none of them is pairing off their stake through this IPO. And is there a lock-in period for these investors who had come in the pre-IPO stage? I think pre-IPO stage is about 6 months lock-in. And then we also have finalized about 15 anchor investors on Monday. Yes. So they also have a lock-in about a month, is what I hear. And the rest is now an issue which is going on from yesterday onwards. That's 60% of the funds being raised is via OFS route. The promoters are trimming their stake. Your stake will reduce from 59 to 46%. Rangarajan sir, why are you selling off? We don't want to sell off. I don't want to sell off. This is a 36-year-old company. We've not sold off. But there's a minimum size required. And what was told by my investors as well as my merchant bankers, that this is the right size of issue. So we're doing it. We're not interested in selling. So mainly for right sizing the issue. Yes. There's a promoter pledge of 1.25 crore shares. You had secured loans from SBI and you had pledged your stake. Post IPO, does that change? Will those pledged shares be released, sir? Post IPO will be zero debt. We are making cash. And all the pledged shares will be taken out of SBI. This was done in 2004 when we need working capital of about 3 odd crores. They wanted a pledge of shares, and that is what we've done. It's not for personal requirements. It's for official requirements of the organization. Post that, we've gone through 2 rounds of private equity, but my shares have been pledged. Though the equity was very little, we borrowed money from 30-40 crores from banks. We replaced, paid them back all through our years. The pledge we are continuing because once given to SBI, it doesn't come out so easily. But it will come out end of January. The pledge will be out. So it's going to be a debt-free entity post-successful IPO. Yes. Finally, your revenues grew 31% CAGR through FY19 to FY21. Now with that additional capex hopefully coming on stream, you doubling your capacity. Now with that aggressive order book that you're talking about, what kind of revenue momentum, what kind of financial forecast do we have, sir? You might have done some back-of-the-envelope calculations. What kind of growth you've seen? Yeah, we have orders on hand for 2 years, but this is to be delivered in the next 2 years. More than that, we have products developed and delivered to DRDO based on the repeat contracts are expected in the next 1 or 2 years' time. That's a huge pipeline of 10 times the contracts that we have. So we're very, very confident of our growth now because the visibility is there for the next 3 years, continuous visibility is there. And we expect to scale the business 40% year on year. And as we go along, we expect to even improve on our EBITDA and improve on our PAT. Okay, Mr. Rangarajan, thanks a ton for joining us. Best wishes for this offering, and once you list, we're going to talk on the financials and outlook per se. Thank you, sir, for joining in. Thank you. तो उम्मीद करता हूँ कोशिश तो कर ली मैंने, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा और कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमारे साथ इस समय SMIFS के हेड ऑफ रिसर्च शरद अवस्थी साहब भी हैं। शरद, इस कंपनी इस आईपीओ में बात करूं उससे पहले SMI मैं हमेशा जानना चाहता था, ये SMIFS क्या हुआ, कोई फुल फॉर्म है क्या इसका? पहले स्टीवर्ट एंड मैकेर्टी हुआ करती थी कंपनी, उसके बाद कुछ मैनेजमेंट चेंजेस, कुछ लोग एग्जिट किए, कुछ लोग रह गए, तो अभी नया फॉर्मेट है स्मिफ्स, क्योंकि हमारा रिटेल फोकस काफी बड़ा है पिछले। तो SMIFS नहीं कहेंगे, स्मिफ्स कहेंगे? हाँ, स्मिफ्स कहेंगे। स्मिफ्स कहेंगे। अच्छा शरद, ये डेटा पैटर्न्स कल 3-3.5 गुना सब्सक्राइब हो गया था, आज भी 5-6 टाइम्स दिखा रहा है इस समय, तो इंटरेस्ट तो जाग रहा है, पैसा लगाना है क्या इसमें? जी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है स्पेस काफी अट्रैक्टिव है। अगर आप एग्जिस्टिंग साइज देखें तो ग्लोबली भी डिफेंस में हमारा शेयर बहुत कम है, शायद 0.20% के आसपास है। ऐसा कुछ और डोमेस्टिक लेवल पे भी सरकार ने जो चेंजेस किए हैं कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में आपको ज्यादा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स का सपोर्ट रहेगा, तो मुझे लगता है ये स्पेस में बहुत बड़ा ग्रोथ हम लोगों को लोकल मतलब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को मिलना चाहिए। और इस कंपनी की खासियत ये है, जैसा वो मैनेजमेंट में भी बता रहे थे, कि स्क्रैच टू प्रोडक्ट तक पूरा काम करते हैं, पूरा कंसोलिडेटेड प्रोसेस वगैरह करते हैं। अगर आप प्रोफाइल में देखें तो ज़्यादातर बड़े ऑर्डर, चाहे तेजस हो, चाहे लाइट कॉम्बैट है, हेलीकॉप्टर्स हो, सब में इनकी प्रेजेंस है।
और इस वजह से ग्रोथ तो काफी स्ट्रांग रहेगी। और ये कंपनी अभी काफी छोटी है, चूंकि कुछ पैसा लेके ये डेट रिपेमेंट वगैरह भी कर रहे हैं और कैपेक्स भी ठीक ठाक साइज का कर रहे हैं, लगभग डबल कर रहे हैं अपना जो एरिया है। तो मुझे लगता है अगले 2 से 3 साल में यहाँ से डबल होने की तो टर्नओवर और प्रॉफिट में गुंजाइश है। तो उस हिसाब से आपको फिर वैल्यूएशन शायद इतनी महंगी नहीं लगे जो अभी लग रही है। लगाना है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। बढ़िया। तो स्मिफ्स का कॉल है, थम्स अप आता हुआ, एक सब्सक्राइब का कॉल लॉन्ग टर्म के लिए, और 3-1 साल में रेवेन्यूज डबल होते हुए नजर आएंगे। और यही बात हमने मैनेजमेंट से भी करी थी, तो वो भी कह रहे थे अच्छा आउटलुक यहां से नजर आता है। लगाइए पैसा, आप में से बहुत लोग लगा भी चुके हैं, 6 टाइम तो ऑलरेडी सब्सक्राइब हो गया है, लेकिन अच्छा आईपीओ है, ये मानना है एक्सपर्ट्स का भी। क्विकली छोटा सा ब्रेक। शैल सर को आपने आते हुए देख लिया मेरे पीछे से, वो रेडी हो रहे हैं। ब्रेक के उस पर शैल सर और वीरू से करेंगे बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और सुधर रहा है बाजार भाई। बैंक निफ्टी अब 1/3%, 125 अंकों की मजबूती के साथ वापस कामकाज करता हुआ नजर आएगा। निफ्टी लो से वो सब 200 लेवल से 192 वाले जोन से अब 280 की तरफ बढ़ चला है। तो 80-85 अंकों की लो से रिकवरी। अब बड़ा इवेंट आज शाम को आना है, और उससे पहले अब आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा लोअर लेवल से एक स्ट्रेंथ लौटती हुई, ऐसे में शैल सर और वीरू को स्क्रीन पे दिखाइए। शैल सर थोड़ी हिम्मत बांध रहा है बाजार उस इवेंट से पहले। आशीष जी, मैं आपको कह रहा हूं ये दायरे में रहेगा जब तक कि एक स्टेटमेंट नहीं आ जाए। तो 200-250 पॉइंट बैंक निफ्टी पे ऊपर नीचे, 40-50 पॉइंट दाएं बाएं आपको निफ्टी करता हुआ दिखेगा। ये सब इंतजार में है कि मुख से क्या निकलता है यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन साहब की तरफ से, और फिर देखते हैं क्या होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, एसबीआई ने एक अपना लेंडिंग रेट जो है बढ़ा दिया है 10 बेसिस पॉइंट्स पर। तो वो आपको ये दर्शा रहा है कि बड़े लोग क्या सोच रहे हैं कम से कम। और आपके सामने फिलहाल साइडवेज ट्रेंड है दोनों इंडिसेस में, इसीलिए वीरेन जी बिल्कुल साधु के माफिक चुपचाप बैठे हुए, क्योंकि कॉल और पुट कुछ नहीं कह रहे। गोरे बेचे जा रहे हैं हमारे मित्र, और कॉल और पुट कुछ कह नहीं रहे। ये क्या कहना चाहिए, ध्यान लगाने का बाजार है। आप बैंक निफ्टी मत देखिए, इंडिविजुअल सेक्टर्स में आपको बहुत चाल आती हुई दिखेगी। आज का पहला ट्रेडेड काउंटर है बजाज फाइनेंस, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इससे ज्यादा कि साइडवेज बाजार होगा इंडिसेस पे मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। चलिए, तो बहुत शांत है बाजार उस बड़े इवेंट से पहले। ऐसे में कहां है कमाई के मौके, और अगर ट्रेडिंग के अच्छे मौके नहीं मिल रहे हैं तो सुबह तो साइकिल का डिस्कशन हो गया, आज कमाई के अड्डे में अब कौन सा डिस्कशन होगा उस पर भी बातचीत। ब्रेक के उस पार शैल सर वीरू के साथ जुड़िएगा। नमस्कार।